D'accord. Moi, je vous ai aussi demandé à relire ce texte et bien comprendre. Donc, je pense que vous l'avez déjà lu et il n'y a pas de problème à comprendre. Maintenant, on fait cet exercice numéro 1. Alors, dans le texte suivant, indiquez la valeur du temps passé. Oui. Alors, ce jour-là, on a déjà discuté des actions ici, la différence entre imparfait et passé composé. So, oui. OK, première phrase. Qui va faire? Qui va le lire? Moi, madame, je voudrais OK, commencer. vas-y. Le coq chantait chaque exercice 1 dans le Hmm, texte suivant. hmm, Indiquer la valeur du temps passé. hmm, Partie 1. hmm, Le coq chantait chaque matin. hmm. C'est une habitude dans le passé. Très bien. C'est une habitude dans le passé parce que on dit le coq chantait chaque matin. Alors, ça, c'est l'habitude dans le passé. Oui. Deuxième phrase. Le tribunal a rendu son jugement le Jugement. Hmm, jugement hmm, le 25 avril. hmm, Action successive. Successive. 25 avril. OK. Action successive. OK. Non, c'est une Non, action madame. Hmm, oui, c'est une action unique dans le passé. hmm. Unique. C'est une action unique dans le passé. Parce que, OK, on va le discuter. Pourquoi? OK, après. OK, troisième phrase. Action successive. Quand ils ont pris leur retraite, ils sont partis vivre à la campagne. Hmm. Quand ils ont pris leur retraite, ils sont partis vivre à la campagne. So, ça, ce sont en fait les actions. You here see, this is in plural also, successive. Alors, pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est une action successive? Successive, no, like in English also, one after the other. So, one action, followed by another action. Alors, ici, elle a fait une chose après l'autre. So, the two actions are happening. Similarly, here also, two actions are there. Quand ils ont pris leur retraite, ils sont partis vivre à la campagne. And this was just one action in the past, right? It started and finished this action. So that is why ça c'est une action unique dans le passé, deuxième. Et troisième, ce sont des actions successives. Manasvi, is this clear? So two actions are happening. Oui, oui. No. Quatrième, qui va le lire? Quatrième. Il dormait profondément. Il n'y avait aucun bruit. C'est une description du décor. Il dormait. Il dormait profondément. Il n'y avait aucun bruit. Alors, ça, c'est une description du décor, très bien, parce qu'on dit il n'y avait aucun bruit. Donc, on parle du fond. OK, ce qui se passe au fond. OK, très bien. OK, on s'avance maintenant. Aujourd'hui, je vais vous introduire avec le sujet le plus que parfait. Okay, so before this, let me just draw something here. Okay, so let's take this. It's like, c'est une comme axe du temps. है ना? Ça, c'est l'axe du temps. Okay, let us just draw like this, maybe. Okay. So let's just imagine
or assume that here this is the present tense, le temps en présent, present. Okay, this is the present tense, présent. Now, when you're, so what all tenses you have already covered? So the tenses which we already know, ce sont quel temps? Passé composé. Why? So we will just, L'imparfait. right. So we will go like this. So today, let's say today we are here, we are standing here, présent. Okay. So when I talk about future, so I have done future proche, Future n'est-ce pas? So which Proche, is the future near time. future. Okay, we have done sabse pehle will be near future. So today I'm standing here. So then the sabse near is my near future, that is future proche. Après ça, on Future fait simple. future Simple. simple. है ना? So this is like far future. Far future when the situation or any happening is uncertain. Okay, when you're not very sure that this is going to happen, we use future simple. But when we are sure, or maybe certain of us, certain thing, par exemple, après ce cours, je vais dîner avec ma famille. So this is, 100% or 99% certainty is there. That's why on utilities future proche. And then what will be the future of, again, far future, we can also say here as like conditional present. Conditional is something also which is, we can consider it as future, okay, where the things are uncertain or the things act in a conditional way. Okay, these all tenses, conditional you have done. Have you guys done conditional? Oui, madame. Okay, those who Oui, are not madame. done, we will do. Okay, present. And now let's go to the past thing. Now today we are standing here in this present. Okay, so what will be the past? Which tense? Passé. Passe récent. Passé récent. है ना? So this is the recent past. So I have just had my food. I just had a word with my friend. Okay, ça c'est passé récent. Now the past of this passé récent is Passé composé. passé composé. Très bien. So it's passé composé. Okay, I went to market last week. We all had dinner at a hotel last month. So this is all passé composé. Now again, so it was past of this. Now passé composé ka bhi past. What is that? L'imparfait. L'imparfait. Imparfait. Très bien. So this is imparfait. No. So imparfait, we have already discussed that, like when I was young, I used to do this, etc., etc. Okay, so you know where we use imparfait. Okay, now today we will be doing the passé composé of imparfait. Now it's like passé du imparfait ou passé de l'imparfait en fait. So what is that? Le plus que Parfait. Plus que parfait. है ना? So these all tenses you have to cover and we have to know. So plus que parfait is again the passé of imparfait. Matlab the action which is taking place is taking place even before imparfait or before है ना, past composer, like that. So when we'll do it, so we'll understand. So these four tenses, rather these three, are the most important for your exam, any sort of immigration exams like TEF TCF, whatever. Okay, because you get specially marked here. And of course conditional present is equally important for TEF TCF and all that, DELF also, for your spoken French, all these tenses. So be thorough with all the tenses and their application. Ok, comment est-ce qu'il faut les utiliser pendant vos examens? Alors, on s'avance maintenant. So, I'll just read. On utilise le plus que parfait pour parler d'une action passée antérieure à une action passée. The same thing which I just explained. Ok, je viens de vous expliquer. Ça veut dire une action qui a lieu
avant une action, autre action passée. So it's like any action which took place in the past, उसका भी past, है ना? Ça c'est une action passée antérieure. So it's like le passé du passé composé, le passé de l'imparfait, ça c'est le plus que parfait. Il est employé avec un autre temps passé. This one, un autre temps passé. This is what we are referring to. Par exemple, je suis retournée chez moi parce que j'avais oublié mon sac. So we will just do the meaning also. What exactly does it mean? So here also, comme il avait étudié sérieusement, il a réussi son examen. So what we're saying, il est employé. Employé, ça veut dire it is used, okay, with another tense in the past. Like not tense in the past, with another past tense basically in this context. So that past tense here we are referring to imparfait. So we actually have to add imparfait, and plus the past participle basically. So what does it mean? Je suis retournée chez moi parce que j'avais oublié mon sac. Qu'est-ce que ça veut dire? I have returned home because I have forgotten my bag. हाँ, très bien. And la deuxième phrase, désolé, oui. He was sick. As he had studied seriously, he succeeded his exam. So when we use this, first I want to let you know here, plus que parfait or imparfait or passé composé, we have to see that which action has happened at first place. Mane, which action occurred before that action in the past. So in this context, je suis retournée chez moi. Now this is also in past tense. I returned back to my home. Why? Because he had left or he had forgotten his bag. So which action was the first here in this context? पहले तो वो अपना बैग भूल गया ना, then he left his home, मतलब है ना, घर बैग उसका घर पे रह गया, then he left his home and then again he had to come back to pick his bag which he had forgotten. Okay, so that's why on utilise le plus que parfait. You have to see which action took place, before or first, okay, followed by another action in the past. Similarly, comme il avait étudié sérieusement, il a réussi son examen. Obviously, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा seriously, तभी तो वो succeed होगा ना exam में. So it's like कि we again are talking or telling the situation in the past, situation of the past, but we are just explaining since or as he had studied seriously, that is why, c'est pourquoi il a réussi son examen. उसने इतनी पढ़ाई की थी तभी तो वो succeed हुआ. It's like that. So the first action was he had to study seriously and then he could succeed after the studies. ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता पहले succeed हो गया और उसके बाद उसने study करी. No. Donc ici on voit que l'action se passe avant une autre action passée. Okay. Is this thing clear what I'm trying to say? We will so here when you go back and read this thing again, this comprehension, this paragraph, you will understand why. Okay, we will try to read this first sentence itself. Un couple de Parisiens avait décidé de changer de vie et s'était installé à la campagne pour sa retraite. Again, ये सारा बता रहे हैं पहले क्यों, why they did that, then we have it in the story. But qu'est-ce que ça veut dire? Why we are using plus que parfait here? Because ma'am, they first decided to change, then they moved to the. नहीं, दोनों यहाँ पे भी आगे भी plus que parfait है ना, s'était installé.
What was the story? Anybody can speak, please tell me why we are using plus que parfait here in both, and I mean, and then somewhere here maybe we are using imparfait or whatever. What was In the my first? opinion, in my opinion, in this story, they had first uh, switched their places, and then everything happened. That's why they have used Luska Parfait here. Okay. First they decided to shift and then they shifted. First action that they had already decided long back. Right. So basically, we are actually telling this story in the past. So whatever might have happened, Hana, like here, they were just saying trouble, whatever the trouble in leur sommeil quand il chantait à l'aube, etc. So when we start a story, so it's like even when we do TEF TCF preparation, anybody is doing, so we start the story like this. So it's like we are starting what exactly was the consequence also. And quand on raconte une histoire, il faut comprendre le contexte et puis il faut les utiliser selon le contexte. Okay, so similarly here also, if we will read all these examples, d'accord, d'abord on va faire comment est-ce qu'on les conjugue. Ok, la conjugation, how we do it, la forme. On conjugue le plus que parfait avec l'auxiliaire à l'imparfait et le participe passé. Please write this in your notebook also. How do we conjugate? L'auxiliaire est la même pour passé composé. So we have the same auxiliary verbs as être and avoir. There is no change, but the conjugation changes. Okay. How we conjugate? So we use subject plus the auxiliary avoir à l'imparfait. So here we use avoir as in imparfait. Okay, plus the past participle. Okay, as we used to conjugate with passé composé. So in passé composé, we used to conjugate être and avoir in present tense, whereas in plus que parfait, on va le conjuguer à l'imparfait. Wait. What you say, the exceptions, they remain the same, similar to passé composé. So you already know the être verbs. I don't know which method you guys have learned. So it is Dr. Mrs. Vander Tramp and the other is Advent. There are two ways of learning the exceptions with verbs, with être verbs. So we conjugate the être in imparfait et puis on ajoute le participe passé du verbe principal. Alors, descendu, et encore, on va faire des accords. Is this clear? Like, I mean, is this sort of conjugation, is this clear to you? Oui, madame. है ना? Yes. So आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. Actually, I used to follow this in my thing. So avoir in imparfait, okay, plus participe passé plus the objet. है ना? Ça c'est la conjugaison, la structure de la conjugaison du plus que parfait avec avoir. Ça, c'est la structure. ठीक है? Now, with être, quelle est la structure? Sujet plus verbe être en imparfait, conjugated en imparfait, plus participe passé, plus des accords. In this accord, you have to put and then the objet. The difference है दोनों में, है ना? Similar है, but you write these structures. I mean, this way you will learn better. So I will put PP plus accord in a bracket because you have to put the accords with past participle. Ok, ce sont les deux structures. Ok,
So when I say I had, so in English it is actually I. See, passé composé, or in fact passé récent is I just had my dinner. That is passé récent. I just had my dinner. So just wala, I have just done my work. I've just had a call. Passé composé is I had eaten, or sorry, I have eaten my dinner, or I have taken my dinner, or I had my dinner. That is passé composé. But when I'm saying imparfait, I was having my dinner. So imparfait is past past continuous. है ना? I was having my dinner is imparfait. Now plus que parfait is when I had been eating, like that. When I had been eating, so something like that. I had been eating my dinner since whatever. So it is like had. Okay. So you'll get to know the literal translation basically when you read more and more. So have you written one or two examples in your notebook from here, or is this clear? La conjugaison avec en plus que parfait en fait. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui. Oui, madame. Okay, we'll try this one exercise here, and rest, vous pouvez le faire comme devoir et on va le discuter. Okay, so rappel, we'll just recapitulate avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. That we already know. है ना, हमने कभी भी किया नहीं है. Participe passé, we never do the accords with the avoir, right? Il s'accorde avec le COD s'il est placé avant le verbe. So I don't, अभी आपने नहीं किया होगा. There is an exception. Maybe one or two you might have done. We do the accords with avoir also. I mean, with participe passé. When there is a condition, we put COD before the verb. That we will also cover in our future lessons. But for now, we must understand that we do not do the accords with avoir. Okay. Mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. So like this. So if it is masculine, feminine, you have to put these accords, E, ES, or whatever, singular, plural, etc. Okay. Madame, Hmm. je doute sur passé composé. J'ai lu une phrase. Si je dis elle s'est blessé la main. Elle. Sorry, désolé. Elle s'est coupé la main. Quand je dis elle s'est coupé la main, il y aura une accord au le participe passé. Avec coupé? Avec coupé, oui. Oui, tu me dis, est-ce qu'on le met ou non? Elle s'est coupé la main, oui. 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 Elle s'est coupée d'abord. Oui, si. Donc, si on fait mais ici, elle c'est d'abord, ça c'est le verbe en pronominaux, non? Ça c'est pronominal verb. Donc, avec les verbes pronominaux, on fait toujours des accords. Okay. Et aussi, c'est féminin et c'est au passé. Oh, wait. Because in school, some days before, I was just going through some worksheets wherein the students were supposed to do corriger les erreurs. This was given as error, and according to my knowledge, it shouldn't be the error. This should be the correct one, no? So Oui. just wanted to confirm. Oh, yeah. Oui. Merci. Ok, pas grave. Ok. Conjuguer les verbes entre parenthèses ou plus que parfait. Okay, I think we can do these two questions here in the class itself. Okay, so that we understand whether you have understood or not. Please do not go through the answers. Don't look at the answers. Let's just try it right now. So I give you 5 minutes. Je vous donne 5 minutes à faire cet exercice. Exercice numéro 2 et 3. So today we will also do some listening. Okay. Exercice numéro 2 et 3, je vous donne 5 minutes
So those who have taken printout, please do that. The answers in the book. Those who have not, please do take the printout. Okay, so I give you 5 minutes. Et après, on va discuter tous les deux exercices. Deuxième et troisième. Now, anybody can read the question first, second, and third so that we understand what you have to do. Okay, third we can Oui, do. madame. ठीक है, second. Why? Conjuguer les verbes entre parenthèses au plus que parfait. Plus que parfait. La Okay. première, hier soir, No, il so est we don't have to arrivé do the answers, just the questions. Read question number 3. So everybody have understood this question. What you have to do is a simple question. Okay, troisième question. Oui, vas-y. Complétez le texte suivant avec le temps du passé correspondant à ce composé imparfait ou plus que parfait. Avez-vous compris cette question, tous les étudiants? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Donc ça, c'est en fait une question un peu, comment dire, tricky. Hein? Il faut utiliser tous ces 3 temps, passé, composé, imparfait, plus que parfait. D'abord, je vous donne 5 minutes à faire ces exercices. Après, quand on discuterait, on va vérifier les réponses et pourquoi on utilise passé composé here, pourquoi imparfait, pourquoi plus que parfait. Alors, il faut faire cet exercice maintenant. Okay, so I give you 5 minutes, then we will discuss. Alors, oui. Et, ok, qui va commencer? Exercice 2. Oui, vas-y. Hier soir, il est arrivé en retard parce qu'il avait oublié ses clés. Très bien. Il avait. Il नहीं होता है, so it is always il. Donc, Il. oui, parce qu'il avait oublié ses clés. Très bien. Alors, oublié avec E accent aigu. Ok, deuxième phrase. Qui va le faire? Moi, madame. Oui, vas-y. Oui, nous avons compris, mais nous trompé. Nous avons compris, mais Nous avions. Désolé, oui, avions. nous avions. It's Désolé, not désolé. I was Avions. in my mind, it was this only. So it is pronunciation is also nous avions compris. Si vous allez dire nous avons compris, donc c'est comme passé composé, mais c'est nous avions compris. Ok, troisième. Vite, s'il vous plaît. Ils avaient prévu une réception en extérieur, mais il a plu. Extérieur, नहीं, extérieur. Okay, so please, extérieur. Okay, what did you say, the pronunciation again? Ils avaient prévu. Prévu. So, Prévu. ils avaient prévu. D'accord. Prévu. Okay, next. Elle était fatiguée, pourtant elle s'était couchée tôt pour pouvoir se reposer. Oui. Elle s'était couchée tôt. Alors, comment est-ce qu'on va écrire coucher? Couchée Avec avec deux Ah. Donc, elle s'était couchée avec un extra E comme un accord. OK? Donc, était avec... oh, désolé. C'est couché. OK? Et avec... oui. Ça, c'est quoi? Un accord. Elle s'était couchée
tôt pour pouvoir se reposer. Do you understand this meaning? Elle était fatiguée, pourtant, elle Oui, s'était madame. couchée tôt pour pouvoir se reposer. है ना? Pour She pouvoir se was reposer. tired. हाँ. She was tired, though Hmm. she slept early Hmm. for taking rest. Pour pouvoir se reposer, elle s'était then, so that's why she went to bed, है ना? Early, in order Early. to take rest, है ना? In order so that, I mean, or to, she could take some rest, ना, like that. Pour pouvoir se reposer. This sort of expressions, on va le faire. Okay, so that's why I ask you, it's not about just completing the sentences. I mean, not the grammar exercise. Basically, these exercises, at this level, you have to read toute la phrase et il faut bien comprendre le sens, il faut analyser chaque mot, les expressions, etc. Ok. Ok, cinquième. Cinquième. Ils avaient eu des enfants avant de se marier. Ils avaient eu, not eu, it is eu. Ils avaient eu des enfants avant de se marier. Right. Ok, très bien. Alors, exercice numéro 3. Now, this will be a little interactive. Complétez le texte suivant avec le ton du passé correspondant. Composé imparfait plus que parfait. Alors, un homme de 88 ans, ok, ne peut plus rentrer chez lui parce que des squatteurs occupent sa maison. Ah, alors qu'il, what have you written? Qu'il était en Était. vacances. Imparfait. Oui, Alors, était, A était été. imparfait. Était Imparfait, imparfait. oui. Des inconnus Se sont installés dans la maison. se sont installés. Ok, on va discuter après aussi. C'était le son. installé. Plus que parfait. Ok, on va le Alors, voir. moi, c'est plus que How parfait. will you? Okay, how will you write se sont installés? Avec un S. Oui, avec un S parce que des inconnus, c'est masculin pluriel. D'accord. Okay, so we will verify whether it is plus que parfait here or passé composé. Here it is plus que, sorry, imparfait or passé composé. Somebody said a été, something like that. Ok, se sont installés dans la maison d'un homme de 90 ans. L'homme était parti. party, I think. Passe A को- party. était Et Ah, parti. Non, partir parti. किसके साथ होता है पहले तो et ये parti. Être. être. so this you should be clear. Être, not avoir तो use ही नहीं करना है. So you have to use être either with passé composé or plus que parfait. That is the question. So it is not a party. Either it can be a party or it can be était parti. Now il faut choisir la bonne réponse. Quelle est la réponse? Était parti ou est parti? était parti. Et parti. A party. Passé Et composé. okay. Et parti. Okay, we will verify this also. Voir sa fille. Ok, l'homme était parti voir sa fille dans le sud de la France quand il avait rentré. Quand il est rentré avec être. ok, avec être, mais plus que parfait ou Passé composé. Il est rentré. quand, oui, quand il est rentré chez lui, il a trouvé. it is already done actually. So to DIY. So you just have to put participe passé. Passé. Trouvé. La porte bloquée. Ok. Les scatters. Dash. Avait vécu. Imparfait. Quel est l'orthographe? Comment ça s'appelle? Vivez? Vécu. V-I. V-I.
वे, Hmm. आ, Hmm. ई, Pe. Hmm. एन, Pe. पे. Hmm. We. So who was saying vacu? Okay, anyway, that we will discuss whether it is passive composé or, but the imperfect spelling is this, correct? Tranquillement dans sa maison sans autorisation. L'homme Apporter. Apporter. Passive composé. a porté plainte. Okay, passive composé, we will write. Now, now, est-ce que vous avez compris ce texte? वे. Oui, madame. Okay. Now, Madame, कैसे से les sweaters qui me demande cette question? pardonnez-moi. Someone ill. No. So, okay. That, see, we will not, first we will not do the meaning. Chalo, we will do it. But how we have put plus que parfait, passé composé, est-ce que c'est clair ou no? Like, who has confusion that why this is here, why this is here? I want to ask this actually. सबको क्लियर है मतलब? No, madame. No, madame. कहाँ पे confusion है? मतलब pour quelle est la confusion? Ma'am, Ma'am, second blank में I'm not sure why we used plus Hmm. plus que parfait तो नहीं यूज करा है second blank में. Which one? Also, sorry, what's the correct answer for the third one? Yeah, so you tell, like, we will discuss, but where is the confusion? Like, okay, so we will discuss from the beginning. Un homme de 88 ans ne peut plus rentrer chez lui parce que des squatteurs occupent sa maison. Ça veut dire quoi? Okay, even if you don't know the exact meaning of the word, can you just guess it? Basically, even in your exam, you won't understand each and every word, no? You have to make a sense out of the text. क्या मतलब है पहले सेंटेंस का? Who doesn't Comme les squatter voleurs. means who doesn't someone own the house. outsider. Yeah, illegally like or occupy his house. हाँ. So without permission. basically, right. Who is So not the proprietor. oui. Alors ici, il y a des squatteurs qui occupent sa maison, है ना? Des personnes, on peut dire, des personnes ou des gens qui sont déjà occupés sa maison. La maison d'un homme qui âgé de 88 ans. Alors, il ne peut plus rentrer chez lui. Now here it is plus, it is not plus. ठीक है, ये नेगेटिव में है, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे. Alors, on prononce plus. Il ne peut plus rentrer chez lui. He couldn't, he could no more return to his home because they scatter. Scatter ici, ça veut dire, like, those who, what you say, no? Trespassers. Huh? On anglais, it's the same we say. In English also we say like squatter. Okay, those who occupy the, what you say, the land, you know, without what you say, permission, sans permission. Okay, so similarly this happened. Now, alors qu'il était en vacances. Now, why we have used imparfait here? Because it's a Passé, c'est description une that action was qui dure pour Hein? En continuation. है ना? Alors qu'il était en vacances, pendant qu'il était en vacances, है ना? À ce temps-là, quand il était en vacances, des inconnus se sont installés dans la maison. Why se sont installés? Why not? What did you say? Étaient installés. Why? Ma'am, because they are just occupied once. I mean, Right. it's an action which happened only once.
वही, सो बेसिकली आई डोंट नो आप लोगों ने पासे कंपोज और इम्परफेक्ट कैसे किया है, बट देयर इज अ ट्रिक इन्वॉल्व्ड बिहाइंड दैट. तो आई थिंक दैट ट्रिक गोज योर वेरी वेल. तो आई सबको हिंदी आती है, तो मैं एक आपको ट्रिक दे देती हूँ पासे कंपोज इम्परफेक्ट की. जब भी हम ये करते हैं तो सो हियर व्हेन आई से आई ट्रांसलेट दिस इन हिंदी, तो मैं बोलूंगी कि एक आदमी जो 88 इयर्स का था वो अपने घर नहीं जा पाया बिकॉज वहां पे कुछ स्क्वाटर्स ने घर ऑक्यूपाई कर लिया था, है ना. So, alors qu'il était en vacances, des inconnus se sont installés dans la maison d'un homme de 88 ans. So, जब pendant que alors qu'il était, जब वो vacations पे था. तो जब हम हमारी हिंदी में ना जब थी या था आ जाता है, ये आप टीचर्स अपने स्कूल में या अपने ट्यूशन में अप्लाई भी कर सकते हो ये ट्रिक. जब थी था आ जाता है वी यूज एम पारफे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना. 90 एक्सेप्शंस तो होते हैं कभी कभी, बट मोस्टली आपका. तो जब वो वेकेशंस पे था तो पीछे से कोई इम्पोस्टर्स यू कैन से, जो है ना एक्न्यू, वो आकर घर में बैठ गए. 88 इयर्स हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे ना. जब वो वेकेशन पे था तो पीछे से इतने सारे लोग, अनजाने लोग उसके घर में आके बैठ गए या कब्जा कर लिया, उसके घर में आके कब्जा कर लिया, ऐसे ही बोलेंगे ना. तो जहाँ पे थी था नहीं आता है ना, कब्जा कर लिया, that we use passive composer. मतलब this is just one trick. I mean this helps a lot in your writing and even speaking. Once you're adapted to it, तो आपको पता चल जाता है. So basically, when the action, so here the action was a continuous action. He was already in his vacation. और ये काम पीछे से हो गया, and this action started and ended there itself. So they came, they occupied the land, और खत्म, वहीं पे बैठ गए. So this action started and ended. So ये वो नहीं है they had, उसकी वेकेशन से पहले नहीं वो पहुंचे थे ना. That's why it is not presque parfait. When he was on vacation, उसके बाद they came. So this is the what you say la chronologie. Il faut toujours respecter la chronologie d'une histoire aussi. Is this clear, this Madam, point? Atonder, madam, why can't we say when he had been on vacations? So then we would use Pluska Parfait, तो right? फिर आगे कैसे आप करोगे अगर उसको बोलोगे when he had been in vacations this, आगे का भी सेंस बनना चाहिए ना. फिर he had been क्या बोलोगे फिर यहाँ पे पार्थिर के लिए. I mean it is a story, Okay, it's not a single sentence. When you're okay. writing a story, reciting a story, there has to be a chronology involved behind that. So you cannot बोल तो सकते होंगे he had been, but how does it going with this? Can you translate this आगे when he had been in vacations? फिर इसको कैसे translate करेंगे, मतलब फिर क्या लगेगा यहाँ पे. When he had been on vacations, some unknown people installed themselves in the house of the man. But how it is, so even in English do we say like that when he had been in vacation, वो तो खत्म हो गया फिर action ना. वो तो हम तब बोलेंगे ना Okay. जब मैं मूवी देखने गई थी तो ऐसे कोई आ गए पीछे से, ऐसे नहीं बोलते. Like, so जब मैं मूवी देखने, so something happened उसी के दौरान, no. Okay. So you have to, this is how you have to even write in your, ये actually मैं आपको बताऊं, ये TEF TEF Canada राइटिंग सेक्शन ए का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए. Those who ever want to take or pass TEF Canada exam, TEF Canada, expression écrite section A. We ask there to write une histoire des mots, comment dire, minimum 80 mots, है ना. तो ये 80 वर्ड्स, 80 to 90 100 वर्ड्स तक मैक्सिमम हम उसको खींच के ले जाते हैं. Those who write till 120 words they will lose points. तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होते हैं. So
this is a perfect example for your TEF Canada writing. If you will write like this, if you will use the vocabulary like this, if you will use norm, so there are many things also involved. छोटी छोटी चीजें इसमें बहुत चीजें हैं, but it is a complete 100% TEF Canada text, your answer Question. actually. हाँ, so it's complete. You have all the tenses here used, है ना? आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में जाकर. So this is what we actually guide people, and so I provide exclusive material for TEF TCF Canada. I mean, in the exam, those things, that questions, they do get repeated for listening also, writing also. But anyway, these are very small tips. So now this is a perfect thing. So please read. जितने भी stories आपको मिलते हैं पासे कंपोजे प्लुस्का पारफे एम्पारफे में, read. जितने भी, so you start reading any those who are preparing for these exams, start reading French newspapers, RFE वगैरह TV5 Monde, इस पे news देखा करिए, so that you will discover this. Anyway, so this first point is clear. तो मैंने हिंदी में भी थोड़ा सा समझाया है. I hope this is clear. Now Ma'am, the this, literal translation, the English translation will always have been word, right, to a past tense if we want to translate it, if we no, want to not mean really. that. No, not really. ऐसा For नहीं है, वो Pliska कॉन्टेक्स्ट Parfait, पे पता चलेगा. वो okay, पता okay. चलेगा, because see, bean हम बोल सकते हैं, but when there is a story ना, story में तो you have different tenses involved, no? ऐसे थोड़ी बोलोगे ना, I had been while, yeah, what you say, I had been to go, I So, had been to Goa, वो तो खत्म हो गया ना बस. so ma'am, whenever we want to use this kind of a translation, when I want to mean that I had been or the sun had been, whatever, at that point we'll use Pliska Parfait. If we want to talk in Yes, that context depends, only. like yeah. Okay, बट that's all. ऐसे नहीं, मतलब अगेन, सो पासे कंपोजे प्लस के पारफे आप देखोगे, दे आर मोर और लेस सेम, मतलब इट्स लाइक द एक्शन एंडेड देयर, बट हाउ वी यूज इट, दैट डिपेंड्स. Okay, in the third here, l'homme. Okay, so what is here, what will come here? L'homme dash parti voir sa fille dans le sud de la France. ए पार्टी. हाँ, इसी ओम के बारे में बात हो रही है ना? तो अभी क्या है, निकले तो नहीं जा रहा ना, मतलब निकले तो नहीं जा रहा ना, मतलब एक ही बार निकल गया, राइट? He left. So what will come here? L'homme est parti voir sa fille dans le sud de la France. Yeah, so this is the right answer. He went or he left to see his daughter in the south of France. So est parti, khatam, the action started and ended. Quand il est rentré, है ना, chez lui, जैसे ही, जब वो अपने घर. So basically हिंदी में आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना? l'homme est parti, तो वो सो वो पीछे से वो आ गए, एंड देन उन्होंने कब्जा कर लिया, और आदमी he left वो अपनी डॉटर को देखने फ्रांस में, एंड व्हेन ही रिटर्न, जैसे ही वो घर आया, उसने देखा, जैसे ही वो घर आया, पासे कंपोजे, उसने देखा la porte Action bloquée, successive. है ना, राइट. सो उसने देखा कि जो डोर्स हैं वो शट हुए हुए हैं, है ना, द डोर ब्लॉक्ड. ओके, ही couldn't open the door. Ok, so il a trouvé la porte bloquée. Les squatteurs vivaient tranquillement dans sa maison sans ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Les Like the squatteurs vivaient. squatters were living very peacefully there without Silently, any right. permission. हाँ, without their permission, है ना? So this les squatters ou les squatteurs vivaient. So the squatters were living, है ना? वो तो पहले से ही रह रहे थे ना, तो that is imparfait, ना? So les squatters vivaient, उसके आने से पहले ही आराम से रह रहे थे वो घर में, विदाउट परमिशन.
L'homme a porté plainte. उसने he went and made a complaint. तो इसमें plus que parfait तो आया ही नहीं कहीं पे. Oh sorry, I have était par désolé. किधर हाँ बोलो. Donat troisième blanc. हाँ. Ça sera été parti. Serait. Oui, हाँ. ça serait été parti. हाँ. Parce que Pourquoi? c'est la première action. और this one? C'est en passé composé, c'est correct. C'est तो À mon passé avis. composé, c'est correct. So none of you stopped me here when I was explaining. क्योंकि why जब मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था, you didn't maybe observe that I was also hesitating because I couldn't translate, but none of you pointed me. Why it is it? अभी मैंने समझाया था first action, second action. और जब मैं हिंदी में भी करी थी तो कुछ बन नहीं रहा. Why it is était parti? The man had left to see his daughter. Right. So first action is this basically, followed by, or maybe this action followed by this, no? जब वो वेकेशन पे था, मतलब वो पहले अपनी डॉटर को देखने गया था और उसी दौरान des inconnus se sont installés. The first action is this, no? यहाँ पे निकल गया है ना वो. समझ में आया ये वाला पार्ट? मैम like past and past, it's like पास्ट है, बट एक्शन पहले क्या हुआ है? पहले वो जो इम्पोस्टर्स थे वो आके कब्जा कर लिए, या फिर वो पहले अपनी पहले बेटी को मैम मिलने वो निकला गया था? था. ये बात ये होती, दिस इज दी स्ट्रैटेजी ना. पहले वो Okay. अपनी बेटी को मिलने गया था, तब बाद में ये सारी स्टोरी हुई है ना, जो भी स्टोरी आगे चल रही है. So this is how you have to, even if you use one plus que parfait in your exam and write like this, you get 100 on 100. I mean, this is how you should write. L'homme était parti voir sa fille dans le sud de la France. ये तो हमने सिर्फ एक बीच में डाल दिया एक लाइन, और ऐसे ही हमें टेफ में करना पड़ता है. एक बीच में डाल, मतलब we have to use somewhere plus que parfait. So, ma'am, plus que parfait will be past perfect and imperfect past continuous और passe composé will be simple past. अगर वैसे देखे तो, like in terms of Past tense, construction. simple past tense, yeah. Simple past tense, correct. Oui. ठीक है, so please read this plus que parfait, passé composé and imparfait. Which action takes place पहले, कौन सा एक्शन पहले हुआ है और खत्म हो गया, कौन सा एक्शन पीछे चल रहा है कंटिन्यूअस में. ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. So again, il faut le relire. So je vous donne exercice numéro 4 comme devoir. Ok. This you have to do. We will discuss. Remettez le fait divers suivant dans l'ordre. Again, this is a story going on. Please take care of the adverbs finalement and immédiatement. Okay, you see how the story is taking place. What sort of connectors we are using. En fin de journée. We are ending. Quand, tout à coup. These sort of expressions. Tout à coup. Okay. Then, l'homme a alors envoyé. Again, les connecteurs logiques. En regardant, gerondif we are using. So, gerondif you might not have done, but this is gerondif. Okay. Que, qui. So this is a complete like a story. So we looked for this. So please, when you read it, put it in the order. Why I was saying this is a complete TEF based answer. Here you see we started the story very simply, nicely. And we are using what? These conjunctions, है ना, like parce que, present tense है, no plus हमने negation का एक expression use किया है, we are using alors que expression, है ना, the connector, है ना, des inconnus, so good level of vocabulary throughout. Okay, long, and then the tenses are here, of course. Quand, okay,
la porte bloquée. Again, so bloquée here is acting as an adjective. Okay, la porte bloquée. Tranquillement, or we are using one adverb. We are using one noun. So you see, it is a complete text. Even if you write this, you get good points. So please take care. Here also you can analyze, read, understand, and then do. Just do not 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर दे दिया और खत्म. जब तक आपको इसका पूरा मीनिंग नहीं पता है, il faut relire encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, pas de problème. Mais il faut à la fin comprendre le texte, la chronologie, le sens, etc. Okay. Now here comes this question, exercice numéro 5. Ok, qui va lire cette question? Est-ce que je peux lire? Vas-y. Un journal local lance un appel à témoins. Vous écrivez pour raconter ce que vous avez vu. Trouvez un titre puis rédigez le fait divers à partir les éléments donnés. Évoquez les circonstances, puis les événements successifs et enfin le dénouement. Et enfin, le dénouement. Dénouement. Oui. Dénouement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette question, avez-vous compris? Tous les gens? Un journal local, है ना? Lance un appel à témoins. Un appel à témoins, ça veut dire? Appel à témoins. Lance un appel. Lance un appel. Lancer un Call. appel. Has Right. made a call. Right. Call. So lancer is to launch, like, है ना? To launch or to release, है ना? So here basically a local newspaper, so in this context it is like they calls, a newspaper calls à témoin, témoigner, témoignage. Experience interview. नहीं, témoin होते हैं witnesses. Eyewitness. हाँ, है ना, witness. तो यहाँ पे so a local newspaper they calls for witness. क्या witness? So maybe witness or witnesses in this context क्योंकि कुछ incident हुआ है ना? तो vous écrivez pour raconter ce que vous avez vu. What does this mean? Witnesses किस लिए बुलाए हैं उन्होंने? बोलो, ये तो मीनिंग पता हो. What did you witnesses to tell? What did they see? Right. So you write to tell. So you écrivez pour raconter. You write to recite. और तो आपको लिखना है what you have seen, है ना? There during that incident, or what you did see there. Trouver un titre. Find a title. Trouver un titre, puis rédiger le fait divers à partir des éléments donnés. यही होता है हमारा टेफ कनाडा का एग्जाम में. fait divers ही हमें लिखना होता है और हमको ऐसे ही एक स्टोरी का स्टार्टिंग दिया होता है एंड il faut continuer l'histoire à travers votre créativité, votre imagination, etc. So you see, we are preparing ultimately for that as well, but yes. So rédiger le fait divers à partir des éléments donnés. So you have to consider these elements here. Évoquer les circonstances, puis les événements successifs et enfin le dénouement. Ça veut dire quoi, dénouement? Outcome, le résultat. Le résultat ou, है ना? À la fin, c'est qui s'est passé. तो अभी समझ में आया क्वेश्चन में क्या करना है everybody? Oui. Everybody have understood. So here the ideas already are given. On va le lire. Lire जगह क्या है? À la plage. So you have to think about a story. कुछ भी story बनानी है. So be creative. Have good imagination. है ना?
person, कितने लोग थे वहां पे, so we are just giving you a description. Ok, la description, le décor. Un enfant de 8 ans et un homme de 80 ans. तो अभी यहाँ पे दो, so you know, just make a creative story out of. Fait, l'enfant a sauvé l'adulte de la noyade. C'est quoi? Drowning, drowning. Quel est le verbe pour ça? इसका verb क्या होता है? ड्राउनिंग का वर्ब होगा ना, ड्राउन क्या होता है फ्रेंच में वर्ब? Est-ce que c'est OR? Le verbe en complet, dis-moi. OR quoi? Noyader. Oui. Ok. D'autres personnes? Noyer. ड्राउनिंग पता है या देखा है, जो भी है, सो यू हैव टू आल्सो लुक फॉर क्या बोलते हैं, द वर्ब फॉर्म, द Le verbe noyer. la forme verbale, la forme nominale, tout ça. Noyer, on dit noyer, c'est to drown. De la noyade ou la noyade, c'est drowning. So l'enfant a sauvé l'adulte. You see, क्या हो रहा है यहाँ पे, और वो भी 8 years का. De la noyade. Oui, madame. ठीक है, so il faut imaginer l'histoire, il faut être créatif, il faut venir avec les textes intéressants, il faut utiliser tous les éléments grammaticaux, par exemple les adverbes, les adjectifs, les connecteurs, ok, les expressions de la chronologie, par exemple, tout d'abord, premièrement, deuxièmement, finalement, d'abord, après cela, ensuite, all those stuff. If that's okay, if you're not able to write that way, what I am demanding, c'est pas grave, mais il faut commencer à écrire. ठीक, MENT वाले जो एडवर्ब्स हैं, एक दो यूज करने हैं, एडजेक्टिव यूज करो. ठीक है, सो 3-4 स्टोरीज वी हैव ऑलरेडी रेड, सो 1 is here as a homework, 2 is here, 1 story 2, and then you have here a big story 3. So you can take ideas from these 3 and you can create here. Okay, कितने words है यहाँ पे? words नहीं लिखा है, so I give you whatever maximum words you can write. There is no limit. मतलब minimum तो है ही, 80 words होना चाहिए minimum. Okay, so you can exceed it to 100, 150, whatever. But ऐसा नहीं है कि 150 200 लिख रहे हैं तो repetition. So always try to avoid repetitions. Try to use pronos in your text. ठीक है, तो हम करेंगे धीरे धीरे, और कोई पीछे से नहीं देख के मुझे लिखेगा आंसर में, अगर होगा तो I do not know, but nobody will copy. Okay, any questions or any doubt? No, madam. So I wanted to do this listening thing also. Wait a minute. Okay, so we will do this listening. Écoutez, écrivez les phrases. Ça, c'est le dicté. Do you understand qu'est-ce que ça veut dire dicté? Dictation. Wait. So I will just play the audio. We will play it once, twice, thrice. Doesn't matter. You have to understand the answers. Okay? Say page. So please write. Take your pencil, pen, whatever, and register and be ready. I'll play the audio. Mute yourself, everybody. And please écoutez et écrivez les phrases. ये dictation है phrases वाली, not words वाली. ठीक है? So I'll just play the audio. This is audio numéro 1. Unité 1, Is this leçon audible? 1. Was this audible? Oui. Yeah. Oui. Okay. So I'll first play the audio. I'll give you some time, 10 seconds or 20 seconds.
to just, think about it more, look at it once more. Then I'll play the audio once more. You can verify your answers. If you have not written the answers, you can again write, and I'll play the third time to again give you a chance to verify your answers, and then we will discuss. ठीक है? So, moi, je commence. Il faut être attentif. Dictée. Lecture normale. Un employé de banque a porté plainte contre une retraitée. So she in the beginning she says lecture normale. So what does it mean, lecture normale? Lecture normale, the way she says, like a normal reading. Okay, so she's saying it normally, first wala. तो पहला भी समझने में time लगेगा. I'll play it again. What she's saying after La that. retraitée avait volé de l'argent à la banque. Première lecture lente. So she says, actually the first reading she's doing in the normal way, and then she will give you as a dictation. She'll read slowly. Première lecture lente. Okay, now the slow. Please mute everybody. So I'll go back. Now she will be Dictée. Lecture normale. Un employé de banque a porté plainte contre une retraitée. La retraitée avait volé de l'argent à la banque. Première lecture lente. 1. Employé de banque a porté plainte contre une retraitée. Point. La retraitée avait volé de l'argent à la banque. Point final. Deuxième lecture lente. Un employé de banque a porté plainte contre une retraitée. Point. La retraitée avait volé de l'argent à la banque. Point final. So I think it was already slow and twice in the audio. Could you understand everything? The phrases? Oui, madame. Oui, madame. Oui, okay, Oui. très bien. Okay, so who will tell me the answers? Okay, quelle était la phrase? Un employé de banque Un porté- employé. Un employé de banque a porté plainte contre une retraitée. La retraitée avait volé de l'argent à la banque. Okay. Other student, please. Tell me your phrase. Oui, c'est la même. C'est la même, madame. Yeah, la même, mais il faut dire, non? Il faut parler. Repeat. Okay. Un employé de banque a porté plainte contre une retraitée. La retraitée avait volé de l'argent à la banque.
So, un employé de banque a porté plainte contre une retraitée. है ना? Retraité. Retraité, oui. Madame, pourquoi pas un employé de banque a porté une plainte? Non, on dit porter plainte. Ok, d'accord. C'est une expression. Ok, Porter ok. plainte. Ok. Ok. So, ok, la retraitée avait volé de l'argent à la banque, है ना? Avait volé de l'argent. Avait volé de l'argent. So you understood this? À la banque. Why not de la banque? We say à la banque. Voler de l'argent à la banque. Argent à la banque यहाँ पे de la banque क्यों नहीं बोल रहे? Anybody can tell me this? Why not we are saying कि बैंक में से चुरा लिया? Why we are saying in the bank like आला तो इन होता है ना यहाँ at the होता है. बोलो. Why it is not la retraité avait volé de l'argent de la banque? Oui. Je ne sais pas. Je ne Ok. suis pas sûre, mais est-ce que c'est comme voler est toujours avec A, l'article A comme ça? No, 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 Non? no, no. No, mais no. So we say, so okay, okay. La retraité avait volé de l'argent. So he stole some money, है ना? We are not specifying how much. So volé de l'argent, no? कितना भी हो सकता है, कुछ भी पैसे. De l'argent à la banque. Why not from the bank? Why à la, मतलब à la banque, मतलब here in this context it means avait volé de l'argent which was put in the bank or which was there in the bank. इसका मतलब ये हुआ. Like voler de l'argent kept in the bank. Ça veut dire ça. You understood? Okay, ma'am. So when I would want to say that he withdrew some cash from the bank, From so तो फिर the दला बॉन्ग ही आएगा. dala. बट यहाँ पे दला भी लिख सकते हैं. बट यहाँ पे हम आर्जों को आर्जों पे फोकस कर रहे हैं. मनी केप्ट इन बैंक वी आर टॉकिंग. Okay, okay. अगर हम दला बोलते तो होता कि चोरी फ्रॉम द बैंक. मतलब वो दोनों का मीनिंग स्ट्रेस अलग दिया हुआ है ना? Okay, ma'am. So okay, so on employé de banque, so we Unité will 1, verify it in the leçon speed wala. 1. Dictée. Lecture normale. Un employé de banque a porté plainte contre une retraitée. La retraitée avait volé de l'argent à la banque. Oui. Très bien. So oui, vous avez compris. Très bien. So il faut lire this thing yourself. Okay, so you already know these sounds. ये सब मैं A1 A2 में मैंने cover भी किए थे already. So those who have not, मतलब जिनको पता है, not done A1 A2 with me, so आप ये पढ़ सकते हैं. Those who have done, they already know I have taken these sounds in the very first 2-3 classes. Okay, so you can try reading these basic things. So please complete. On a déjà fini cette leçon, mais il nous reste à discuter cet exercice écrit. So you see now we have covered reading, writing and listening. So speaking भी धीरे धीरे करेंगे, but writing से let's start. Okay, so we will meet on Monday then. Vous avez des questions, des doutes, vous pouvez me demander. And for Monday, please read the lesson number 2 का text, है ना? So please already just come complete with this. Do this brave four and try. Please underline the words, meanings, write their meaning so that we don't, like not waste time, I would say, but we should actually use more of our time in practicing listening and speaking, not doing word meanings. That's what I'm actually looking for. Okay, so do you have any questions or doubts? No, madame. Merci. No, madam. Okay. No, madame. Okay, au revoir then. Bon weekend. À lundi. Alan ji.